Acha, these are the quantities you should know about energies. What are the energies? Now, B part of the question is, what is initial GP? Abdullah Zubair, what do you think? What would be the value of initial GP? Initial GP will be 0 joules. Because initially the height is 0. Initially the height is 0, so initial GP will be 0 joules. Initial GP is 0, and what about initial kinetic energy? Maximum. Yes, it is 1/2. Very good, beta. I think it was Zainab. 1/2 mu square, and this is maximum kinetic energy. Very good, beta. Acha, then you have to think about, this is for initial. Initial GP is 0. Shamir, why is it 0? Because initially the height is 0. When the height is 0, GP is 0. And initial KE is 1/2 mu square. So since the speed is u, and initial KE will not depend on the angle of projection because KE is a scalar and it's not a vector. कोई बच्चा मुझे कह रहा है कि मैं प्रीवियस पेज पे जाऊं. बेटा ये प्रीवियस पेज है. If you want to take screenshot, this is page number 2. Sir, can I ask a question? जी बेटा, why not? GP or kinetic energy में are we considering heat energy or chemical energy, any of these? No, we are ignoring all of them. We are ignoring air resistance. See, we are ignoring all the resistive forces. Abdullah Zubair, if there are no resistive forces, then there is no resistive work and heat cannot be generated. I think you understand this. So we are only considering the kinetic energy and the GP. We are assuming that the system is, the earth is isolated without any other forces which convert energy. Simple words में KE और GP के अलावा कोई energy नहीं है. The only two forms of energies are GP and KE. No other form of energy is there. No losses are there. So the only two forms of energies are GP and KE. If the GP decreases, the KE will increase. So as the object moves upwards, the KE will increase and the GP will decrease. So this is initial GP and initial KE. And initial GP is, Zainab beta, it is maximum or minimum? It is GP. Initial is minimum. It is GP minimum. Now, what about the GP and KE at maximum height? GP at maximum height. GP is gravitational potential energy. GPE is gravitational potential energy. So, मैं पूरा word लिख देता हूँ if you're getting confused. I think you did O level. I believe you did O level. So gravitational, ये अब्दुल्ला जुबैर ने क्वेश्चन पूछा है. अच्छा, gravitational potential energy, that is GP. बेटा मैं इस क्वेश्चन पे क्या कहूँ, आपने O लेवल में GP पढ़ा हुआ है, ठीक है, चलें खैर कोई बात नहीं. मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन फिर थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने के लिए था. GP is gravitational potential energy and at the maximum height, GP at maximum height, it is the maximum GP, and its formula will be mg times h maximum. Sometimes the examiner will ask you to substitute h maximum. If you substitute h maximum, it would become m times g times. Abdullah Zubair, what is the value of h maximum? अब तो बता दो. Sir, हमारी u sin theta over g. अच्छा अब्दुल्ला जुबैर, जो तुम्हें हेल्प आउट कर रहे हैं ना बच्चा, जो तुम्हें बता रहा है, उसकी आवाज मुझे भी आ रही है. सर नहीं, कोई हेल्प आउट नहीं कर रहा. पीछे से कोई आवाज आ रही थी. अच्छा, u स्क्वायर साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर, ये मुझे अली सिद्दीकी की जैसे आवाज लग रही थी. u स्क्वायर साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर. वैसे मैं एक मजे की बात बताऊं, पेपर मार्क करते हुए भी ना काफी बच्चों का मुझे ये लगा है कि काफी बच्चों ने मिलजुल के पेपर किया है. तो बेटा अगर ऑनलाइन एग्जाम हो ना तो इसको अवॉइड किया करो. मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ, तो जब मैं पेपर मार्क कर रहा हूँ तो मुझे पता चल जाता है. अच्छा, u स्क्वायर साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर ओवर 2g. तो इफ वी सिंप्लीफाई दैट, तो इट वुड बिकम
This G is cancelled with G, and it would be finally 1/2 m times u square times sine of theta whole square. So this is the formula for GP at maximum height. This is the formula for GP at maximum height. ठीक. अब्दुल्ला जुबैर, तुम ऑनलाइन एग्जाम में बच्चों को ऑनेस्टी लेवल के कितने मार्क्स दोगे आउट ऑफ 10? सर ऑनेस्टी पर मैं दे दूंगा 7 या 8, है ना? सही बता रहे हो, मैं भी 7 या 8 ही दूंगा. अच्छा, अब this is 1/2 mu square sine of theta whole square. And what is KE at maximum height? KE at maximum height. Zainab beta, it is minimum KE or maximum KE? It is minimum होगी. minimum KE. And you know, at maximum height, the velocity was, Abdullah beta, क्या थी velocity at maximum height? At maximum height, what was the velocity? Do you remember? सर 0. No बेटा, वो तो vertical वाली थी. मैं तो velocity overall पूछ रहा हूँ. Helpline पे call करो. So V vertical is 0. अब्दुल्ला, वो तो V vertical था. What about V horizontal? Ali Zaidi, what is the value of V horizontal at the maximum height? सर फिर पूछिए. What is the value of the horizontal velocity at the maximum height? 0. No बेटा, सर horizontal आप प्रीवियस velocity पेज will पे be, जा सकते हैं. जी जी बेटा मैं जा सकता हूँ. It is u cos theta. Beta, at the maximum height, the horizontal velocity is u cos theta, and obviously the velocity will be the horizontal velocity only. सर आप ये सारे फॉर्मूलाज फिर से लिखवा देंगे क्योंकि आई डोंट थिंक आई वाज प्रेजेंट इन द लास्ट क्लास. यहाँ मैंने लिखे नहीं क्योंकि मेरे पास ये है ही नहीं. बेटा लिखा करो, मैं लिखवा दूंगा. ये प्रीवियस क्लास में लिखे थे. चलें खैर. अब देखो, मैक्सिमम हाइट पे you wrote the formula for velocity, and to find the minimum kinetic energy, it is KE at maximum height. You have 1/2 into m into v square, but at maximum height the velocity is only the horizontal velocity, which is unchanged, so it would be u cos theta and whole square. So KE at maximum height is 1/2 mu square cos of theta square. Now, if you look carefully, you have two formulae. One is for GP at maximum height. Formula for GP is going with sine. Formula for KE is going with cos. So formula for KE goes with cos, and the formula for GP goes with sine. अच्छा, मैं next page पे ना इन सब formula की summary लिखवा दूंगा. ठीक है अब्दुल्ला जुबैर, अब की बार लिख लेना. तो on the next page, summary of all these formulae that we wrote. सर जो आपने आखिर में फॉर्मूले लिखे इसमें u स्क्वायर और cos थीटा स्क्वायर दोनों क्यों आए हुए हैं? बेटा इसमें इसलिए आए हुए हैं कि देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है. एट द मैक्सिमम हाइट you only have the horizontal component of the velocity. Now at the maximum height, v is u cos theta, because the vertical velocity becomes 0. Now when you substitute v with u cos theta, what you will get? It will be 1/2 into m into whatever the value of velocity is. At the maximum height, the value of velocity is only the horizontal component, which is u cos theta everywhere. The horizontal velocity is u cos theta everywhere, so it will become square of this. It would be 1/2 into m into u square into cos theta square. Moaz, you understand this, or do you have any confusion in this? Sir, I understand this. ठीक है. Now on the next page we'll only write the formula. ठीक है, for energies. Now students, if you have not copied this page, please take a screenshot. And on the next page, we are writing formulae for energies only. And then we are solving some examples, and then the projectile will end. And you'll solve the past exam questions of projectile motion. Then we are starting dynamics or graphs of motion. सबके हम आखिर में करेंगे in the end of the topic. अच्छा, now for energies.
formulae for energies only. Formulae for energies only. So on this path of projectile, if we want to write formulae for energies, then we have to go with, first of all, here the KE is maximum and the GPE is minimum. So Abdullah Zubair, can you help me in writing these formulae quickly? Okay, Ali Siddiqui. Ali Siddiqui, can you help me in writing these formulae? First of all, what is Yes, KE sir. maximum? Quickly. It is 1/2. 1/2 1 over 2 mu mu square. square. GP is 0 because the height is 0. At initial point, GP will be 0 as height here is 0. At the maximum height, GP will be maximum and its value is 1/2 mu square. That is basically the initial KE times sine of theta square. And at the maximum height, KE is minimum, and the formula for that is 1/2 mu square cos of theta square. And one other formula was for H maximum, that was U square sine of theta square over 2G. We will not get familiar with these formulae unless we solve some examples. Now students, if you have copied this page, good. Otherwise, please take a Sir, बस यही है? screenshot. बिल्कुल यही है. अब इसमें That हमने all? कोई नहीं कोई ठीक यही है ना, इससे ज्यादा क्या होगा? अच्छा. बेटा ये इजी होता है, सिर्फ आप फोकस लूज कर देते हैं ना, अदरवाइज इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है जी, डन. अब्दुल्ला जुबैर, कुछ इजी हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए यही है सिर्फ. नहीं सर, इजी नहीं, मुझे लगा ज्यादा होंगे फॉर्मूलाज. मैं तुम्हें तंग कर रहा हूं. अच्छा, नेक्स्ट पेज. Go to the next page. Acha, now let's solve some examples related to this. Example number 1. Example number 1. A football is kicked. A football is kicked with a speed of. बेटा आज आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की जो वर्कशीट मैंने शेयर की है वो कंप्लीट करनी है. ठीक है, यू विल सिट एंड सॉल्व द वर्कशीट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. ट्राई टू कंप्लीट दैट. सर उसकी सबमिशन कब है? उसकी सबमिशन संडे से पहले करा दो, कमिंग संडे से, संडे नाइट से पहले. थैंक यू. यू शुड हैव इनफ टाइम, कोई जल्दी तो नहीं करनी. अच्छा, a football is kicked with a speed of 20 meter per second at 60 degrees to the horizontal. Mass of the football. Abdullah Zubair, what could be a common value for the mass of football? सर 2000 grams, 1000 grams. Okay, mass of the football was about 1.5 kg. So mass of the football was about 1.5 kg. Ignore air to answer the following questions. The first question is find initial GPE and initial
KE of the football. Find initial GP and initial KE of the football. Safan, what is the formula for initial KE? Quickly. 1/2 mu square. Initial KE is 1/2 mu square. Now substitute the values in this. 1/2 into it would be 1/2 into 1.5 kg into the initial speed is 20, square of 20. Safwan, what is the answer for this? That's 300. It is 300. 300. So Yes. 300 joules. This is the initial KE. Acha, Safwan, what is the value of initial GP? Sir, 0. Why? Sir, because there is no height. Because the height is 0. So this is the first part. You have to tell the initial GP and initial KE of the football. Initial GP would be 0 because the initial height is 0. And initial KE would be 1/2 mu square. Done? Sir, sir, जो ये GPE होता है, it's dependent on the height. Yes, it is mgh. GP is mgh as you studied in your O level. It's mass into acceleration due to gravity into height. So this is the first part. Right, second part, B part. What is the total energy? सर जी बेटा. एक दफा पिछले पेज पे जाएं। जी बेटा, why not? If you have not copied, please take a screenshot. Students, if you have not copied, please take a screenshot. हो गया सर। सर ये आज आपने हमें एच मैक्स वाली फॉर्मूलाज लिखवाए हैं, इनकी डेरिवेशन भी याद करनी है। बिल्कुल, इनकी डेरिवेशन सिलेबस में है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, नो द नेक्स्ट सर पेज। वो डेरिवेशन तो आपने सिखा नहीं दी थी, वो तो हाँ सिखा दी थी ना। तो शी इज आस्किंग कि जो आपने डेरिवेशन सिखा दी थी वो हमने याद रखनी है या वो सिर्फ हमारे समझने के लिए थी। बेसिकली हर क्वेश्चन इज कि जो डेरिवेशन हमने की थी इट वाज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग और इज इट इन द सिलेबस। तो आई टोल्ड हर कि इट इज इन द सिलेबस एंड इट कैन कम इन द एग्जाम। इज दैट क्लियर? अच्छा, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द फुटबॉल? इसका आंसर बताएंगे मेरे एक बड़े अच्छे स्टूडेंट, उनका नाम है अब्दुल्ला जुबैर। सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द फुटबॉल? अब्दुल्ला जुबैर, क्विकली। सर हम टोटल जीपी एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का ऐड कर देंगे। तो मुझे तो वैल्यू बताओ ना। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एट एनी इंस्टेंट you will add GP and KE. 300 joules. Yes, very good. You can go with initially. So the initial GP and the initial KE, you can use the values at any one instant. Now the initial GP is 0 and initial KE is 300. So the total energy is 300 joules. C part of the question, as the football moves up, what will happen to GPE, KE? सर ये टोटल एनर्जी
पूरे उसकी जर्नी की होगी फुटबॉल की या फिर एक ही इनिशियल पॉइंट की है? बेटा टोटल एनर्जी जो है ये कांस्टेंट रहती है, assuming that there are no losses. फुटबॉल की टोटल एनर्जी, if you ignore the air, it will remain constant. However, if air is present, then it will decrease. फुटबॉल की टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी या डिक्रीज होगी, it depends on whether air is present or it's not. Since we are ignoring the air, बेटा जो आपका क्वेश्चन है वही सी पार्ट वही है. If you look at the question, as the football moves up, what will happen to GP, KE and total energy? हाँ जी, Ali Siddiqui, what would be the answer? Quickly. So the total energy will stay the same, kinetic energy will increase and GP will decrease. अच्छा, if you answer this question like this, तो मैं आपका एक नंबर काट लूंगा. बताओ क्यों? क्यों सर? वो इसलिए कि when you say total energy will remain constant, you should tell that assuming that there are no energy losses. Because if the football has energy losses, then obviously the total energy of the football, think about that. If the air is present or some other form of energy is also present, then the total energy of the football may not remain constant. अली सर बेटा ये लेकिन देखो, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि इग्नोर एयर टू आंसर द फॉलोइंग, तो फिर still you should write there are, assuming that there are no losses. ठीक है, the total energy. हाँ, अगर एयर को इग्नोर कर रहे हैं तो फिर आपकी बात ठीक है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है ना. You could have maybe dust particles, maybe some other object. Okay, so many possibilities are there. It's better to write if there are no energy losses. So the total energy of the football will remain constant if there are no energy losses. If there are no energy losses, the total energy will remain constant. GPE will increase. GP will increase. Reason? As the football is gaining height. Very good, beta. So GP will increase as the football is gaining height. And students, if you have not copied this page, please take a screenshot. I have to move to the next page. So GP will increase as the football is gaining height. What about kinetic energy? The speed of the football is decreasing. It has minimum speed at the highest point. So KE will go on to decrease. So you must write KE will decrease as the speed of the football is decreasing. KE is minimum. क्लास में हिबा रसूल है अभी? हिबा बेटा, at the maximum height, why KE is not 0? Sir, because speed decrease होगी, speed 0 होगी, लेकिन velocity. नहीं, स्पीड, ओहो, स्पीड 0 नहीं होगी. यही तो क्वेश्चन था. मैं देखिए मेरा क्वेश्चन फिर से सुने. At the maximum height, KE is not 0. तो मैं ये नहीं पूछ रहा कि 0 है, मैं कह रहा हूँ not 0. You have to tell why KE is not 0. आपके पास पेपर में ये पूछा हुआ है कि for this motion of football at the maximum height, KE is not 0. You have to tell why it's not 0. You'll say, since the vertical velocity becomes 0, but the horizontal velocity is not 0. Or you should say that although the vertical component of the velocity is 0, still the KE is because of the horizontal component. अच्छा बच्चों, आज मैं क्लास थोड़ी सी अर्ली एंड करूंगा बिकॉज मुझे अपने घर से ना
जाना होगा I9। अब होता यह है कि H8 से जब मैं जाता हूँ ना I9, तो मेरा ट्रैवलिंग टाइम होता है 2 to 3 मिनट्स फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। अब मुझे मेरी कुछ क्लासेस घर से हो रही हैं और कुछ क्लासेस स्कूलों से हो रही हैं, तो मेरा ट्रैवलिंग टाइम का बड़ा मसला हो रहा है। स्कूल टू स्कूल बहुत करीब है स्कूल, जैसे LGS और BMI का डिस्टेंस इट्स ओनली 1 to 2 मिनट्स, लेकिन जब मैं G11 से जाता हूँ तो इट्स मोर डिस्टेंस। सो अल्लाह करे सभी स्कूल या तो लाइव पे चले जाएं या ऑनलाइन पे चले जाएं। आधे लाइव पे हैं, आधे ऑनलाइन पे हैं, तो ये भी हमारे लिए, टीचरों ने तो फिर भागना दौड़ना होता है हर वक्त। अच्छा, KE इज मिनिमम at the highest point, and one thing, KE is not 0 at the highest point। हिबा बेटा क्या लिखेंगे? because Velocity. of horizontal motion or horizontal velocity। KE is not 0 at the highest point because of Horizontal velocity. because of horizontal motion, because of horizontal motion। So KE at the highest point is not 0 because of the horizontal motion। This is part C। Now the last part, that is part D. Part D is find KE and GPE at maximum height. And you will solve this question as a homework. You have to substitute values. For example, KE at maximum height is minimum, GPE at maximum height is maximum, and when you substitute the values, KE minimum will be equal to 1 over 2 mu square, cos of theta square। ज़ैनब बेटा यही फार्मूला था। And GP will be 1 over 2 mu square sin of theta whole square। अच्छा बच्चों, अब आपको ना A लेवल में ज्यादा फोकस्ड होना है, ठीक है? आप डेली बेसिस पे रिविजन्स करो, और जो मैं एक दिन पढ़ाता हूँ अगले दिन वो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अदरवाइज A लेवल इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट लाइक O लेवल। मैं बल्कि कल एक बच्चे को पढ़ा रहा था, उसका नवंबर में वो अपेयर हो रहा है, तो उसकी जो बड़ी सिस्टर थी उसने भी A लेवल किया हुआ था। तो वो मुझे बच्चा ये बता रहा था, वो कहता है कि जब मैं अपनी बड़ी सिस्टर के साथ बैठता था तो आई यूज्ड टू थिंक कि यार ये 3 ही तो सब्जेक्ट्स हैं, तो व्हाई दे आर इन सो मच टेंशन। तो वो अब उसका एग्जाम है, एंड नाउ शी वाज सेइंग, वो लड़की थी, तो नाउ शी वाज सेइंग कि अब मुझे पता चला इसका तो एक एक सब्जेक्ट इतना मुश्किल है। तो बेटा यू हैव टू रिवाइज डेली। तो आपका जो O लेवल था उसके 10 सब्जेक्ट्स और A लेवल का एनी सिंगल सब्जेक्ट, दे आर इक्विवेलेंट, ठीक है? और जब आप पास पेपर की एज अ होल प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल रियलाइज दैट कि इसमें यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है? आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है, और अगले दिन जब मैं पूछूं तो आपको आना चाहिए, जो भी एक दिन पढ़ा होगा अगले दिन आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। नाउ यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। अब मेरे लिए ट्रैवलिंग टाइम का मसला है, क्योंकि मुझे स्कूल टू स्कूल तो इतना मसला नहीं होता, तो इसलिए मुझे क्लासेस थोड़ी सी जल्दी एंड करनी पड़ती हैं। टेक केयर स्टूडेंट्स, क्योंकि आज मैं 4G पे क्लास नहीं ले सकता ना, तो जनरली तो मैं 4G पे क्लास लेके फिर ट्रैवलिंग टाइम खत्म हो जाता है तो मैं पूरा टाइम क्लास ले सकता हूँ। आज असल में गवर्नमेंट ने मुझे तंग किया हुआ है, तो उस वजह से मुझे फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलो बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। खुदा हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू।